Can we start? I think 3 participants is there. आयुष एक काम करना, आज मोस्टली इंग्लिश में बोलो, इसको समझ में नहीं आएगा तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट sir, कर I'll try sir. 435 the hospital is cleared empty. Ayush, please continue. Yes. Yes. So in the previous class, we all have learned what is domain and what is your hosting, right? And what is your website and why you need a website, right? So in today's session, we will cover the topic how to purchase a domain and how to purchase a hosting. Then the third step is how to connect your domain with the how to connect your domain with the hosting and with the help of a name servers, right? So name server is required to connecting your domain with the web hosting, right? So for the first step, I'm just sharing my screen to you, and I'm okay, just a second. Satya sir, are you there? Yes. Sir, please, I have no rights for screen sharing. I have given you course, right? Yeah, okay. Yes, so I'm just sharing my screen, and you all have to follow the steps, right? So I'm just demonstrating to you how to purchase a domain and hosting from the different companies. Like if you want to purchase it from Hostinger, from GoDaddy, right, from Bluehost, so you can purchase, right? So for the reference, I'm just showing you that how to purchase a domain and hosting from Hostinger, right? So first of all, you have to just open in your Google Chrome tab and type hostinger.in. Okay, so just enter. Yes, so you can see, scroll it down, and you can see there is 2 options available. First option is best web hosting, then second option is WordPress hosting India, right? So basically the main difference in between the best web hosting and WordPress hosting India is in the in best web hosting, they gave you a simple web hosting, like it's a shared web hosting, right? If you go with the first step, like best web hosting plan, then major difference between the best web hosting and WordPress hosting India is basically in the WordPress hosting India, you can you can receive various types of free plugins with the WordPress, right? But in the best web hosting plan, you can manually you have to download from the plugin sections in the WordPress dashboard, right? So I think you can go with the best web hosting plan, because it for the initial phase, if you want to learn that how WordPress works, how to make a website with the help of a WordPress, so I think you can go up with the this plan, best web hosting plans, right? So you can see, scroll it down, and you can see choose your web hosting plan, right? So you have to you can continue with according to your needs, right? So first of all, I'm just showing you single web hosting plan, right? So in the single web hosting plan, you can see the features of this plan. It costs you 79 rupees monthly, right? So I'm just scroll it down, and I'm show you all the features of this plan, which is 79 rupees monthly. So you can see one website, right? So if you want to make a website for the for the initial phase, if you want to learn WordPress, so I think you have to go with this plan, 79 rupees monthly, right? This plan gives you following features, which are you can host only one website in this plan, right? And then you can see 30 GB storage, right? 30 GB SSD storage.
So this plan gives you a 30 GB of SSD storage. Then you can see 10,000 visits monthly, right? So ये आपको like 10,000 visits monthly आपको यहाँ से provide करेगा. Then you can see one email account is there which is free of cost and free SSL certificate, right? So like SSL certificate is basically secure socket layer, right? You can see in the left part of the hostinger.in you can see this lock option, right? When I right click on this, you can see connection is secure, certificate valid, right? So this basically this is your SSL certificate. So for the future purpose, if you want to like do complete SEO for the website, then SSL certificate is like most necessary to you, right? So make sure you can purchase only like you have like make sure in the plan SSL certificate is also like available for you, right? Then after this, you can see free domain is not available in this plan, right? So you can see in the 79 rupees per month plan, a free domain is not available. So you have to purchase it from the hostinger, or like hostinger also. You can see domain is there. Then domain checker. Click on the domain checker button. Then you can search the different domains here, right? Like I'm just searching yoga tutor. Yes. Yes, so you can see yogatutor.in is available and it will cost around 479 per year, right? So in the first section, इसको ऐड कर देना एक बार कार्ट में एक बार. Yes, okay. Add it to cart. Now select hosting plan. Yes. 79 rupees. Yes. So in the like 79 rupees monthly plan, you can see you have to purchase a manual domain, right? You can also purchase it from not necessary like you have to purchase it only from Hostinger. You also have to purchase it from another companies like GoDaddy, BigRock, Hostinger, Ono Hosting, right? Bluehost. It is up to you from where you want to purchase the domain name. It because Yeah, if let's suppose if I purchased my domain name from GoDaddy and then I want to transfer it's it to hosting, it is possible. You can connect the domain to hosting also. Let's suppose मैंने डोमेन नेम GoDaddy से लिया है, होस्टिंगर से मैंने होस्टिंग ली है, तो वो दोनों भी कनेक्ट हो जाते हैं आराम से. तो आप मेरा एक क्वेश्चन था. यस सर अभिषेक जी. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सपोज कि GoDaddy में मैंने जो वेबसाइट है मेरा GoDaddy में है और होस्टिंग से मैंने साइट ये होस्टिंग परचेज किया. मेरे पास एक और दूसरा साइट है जो कि मैंने डोमेन उसमें भी GoDaddy का है और मैं चाहता हूँ अपग्रेड करने को होस्टिंग राजा पे. तो अपग्रेड करने के नहीं देखिए अभी होस्टिंग किस प्लेटफॉर्म पे आपकी है? होस्टिंग राजा पे. देखिए होस्टिंग राजा पे तो वो अपग्रेड दे देगा एक साइट, लेकिन मुझे दूसरा साइट भी, मेरे पास दूसरा डोमेन भी है, तो मैं उसको होस्टिंग राजा को ही अपग्रेड करना चाहता हूँ. तो ये ठीक रहेगा? देखिए हाँ सर ठीक रहेगा सर. मतलब मैं होस्टिंग राजा पे जो उसमें जो सिल्वर प्लान उसका है जो 3 वेबसाइट उस पे अवेलेबल रहता है, तो मैं उसको अगर ले लूं तो ठीक रहेगा ना? मेरा ये क्वेश्चन था. ले सकते हो सर, ले सकते हो. ले लेना. हाँ ले सकते हो. होस्टिंग सबसे अच्छा है. ब्लू होस्ट भी है, इसके अलावा होस्टिंग राजा भी है. होस्टिंग राजा की बात ही मैं कर रहा हूँ. हाँ ठीक है. तो कई प्लेटफॉर्म है. दोनों एक ही यहाँ से लेना. इज इट नॉट देखिए अरे बेटर, इट विल बी बेटर इफ यू परचेज डोमेन एंड होस्टिंग फ्रॉम सेम डोमेन. मैनेजमेंट इज क्वाइट इजियर. लेकिन आप ये इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी कॉस्ट बढ़ जाता है वहाँ पे. देखिए आप पहले व्हाट यू कैन डू, कंपेयर द होस्टिंग प्लान and domain plans, then compare the combined hosting and domain plans. Okay, let's suppose आपको hosting, let's suppose you are getting cheap hosting on GoDaddy, but on the second you are getting cheap let's suppose you are getting cheap domain name on GoDaddy and hosting on another platform. You can connect them, but in the same way a platform which is offering domain as well as hosting quite in quite affordable rate, then you can go with that plan also. Oh, okay. So basically you have to compare. You have to do comparison. Secondly, whenever you purchase hosting,
Because you have to purchase hosting from a good service provider, because the opening rate of website, the server speed, lot depends. What happen most of the time, people purchase hosting from a normal website, and the cost is quite less, but it hampers the performance of the website. So Correct. make sure a good company is necessary, and they are giving the storage in SSD format. It is solid state hard disk format. Okay, most of the companies are not doing it. Make sure. Secondly, So I think according to what you and Lokman sir were last two classes, I think Hostinger or Bluehost. Bluehost. We suggest hosting and Bluehost because their service, I would say, customer care service and hosting plan are way better, and they works well. Last year, I have purchased hosting space from GoDaddy. I think that we have spent more than 9,000 rupees, but the quality is not there. Oh, Sir, Satya sir. Yes, sir. Yeah, what I would like to ask is, suppose I have taken for my website the silver plan for one hosting. Yes, sir. Now another plan at Hosting Raja. Can you look for that? What I am telling, Hosting Raja at Hosting Raja server, there is a silver plan where for 3 years, 104 rupees per month. Per month plan is there, and I have purchased silver plan for WordPress. What is the difference between that? Silver plan for only WordPress, sir. Only WordPress. Okay. And one is silver plan for 3 websites. It is not for WordPress. WordPress be there and other be there. So let me explain you, sir. There are many portals which offer this hosting plan designed for the WordPress. So when the plan is only for the WordPress, they give pre-installed plugins, and WordPress website work better on that only WordPress option. Okay, so if you're choosing only WordPress option, the only WordPress will work. But if you are choosing any option in which you can run the website on PHP also, Linux also, so you have purchased 2 different plans, I think. So one is for generic website, another for only for the WordPress. So my suggestion is only that if you're going with the WordPress, I would recommend to purchase a hosting plan only for the WordPress. That will perform better, sir. Got it, sir? No, but one of my one of my website is on this WordPress, and second site is also on WordPress. But since there is no plan, no other plan, no plan there, that's why I'd like to purchase that one. Sir, if you want to upgrade, you can upgrade, but let me check you. We can connect later, sir, because your particular question is, I think so. It is the particular what means a particular website is specific. Then I can guide you much more, sir. Okay, sir. So make sure whenever you are purchasing this particular domain, etc., make sure the duration of the I would say hosting plan matter. If you're purchasing hosting plan for many years, definitely the cost will come down. Please select the hosting plan, Ayush. Select the hosting plan, means that choose the duration of years. Yeah, add to cart. Add to cart now. Look at this. This duration is of hosting plan. I think so. It is of 48 months. But it is for approx 4 years. Please click to only 2 years. Okay, for 2 years, it is showing the single hosting plan is 2,800. So you can choose for 1 year, 2 year, but I recommend whenever you purchase one domain name, at least book for at least for 2 years. Go for the 2 year option for the domain. Minimum 2 years. Recommended is 3 years. Why I'm telling you what recommendation? Because once you going to renew the particular domain name, they will charge a lot of money. So recommended is 3 years, but minimum is 2 years recommended. इसको 2 साल करना दोस्त. Yes. Domain registration ko. Now, okay. Now you see, now you can see for domain registration they are charging 1,000 to 1,005, and for web hosting they are charging that much. So on an average you are getting the total cost of 2 years 4,000 something. Okay, this is the total cost. In the same way, you can compare the plan on Bluehost also, as well as Hosting Raja. These are the I would say the best hosting providers. And what you can do later, you can
compare hosting plan with one particular service provider and domain name from another provider, then you can work also. Please make sure both should be the good companies, so that in future you don't have any technical issues. As well as in the past, in India there was one company which was closed down due to bankruptcy. They are offering domain and hosting, so now all the database is gone. To make sure good company is necessary, whether they are charging you 20 to 30% एक्स्ट्रा. मार्केट में ऐसे ही बहुत लोग हैं जो इस पर्टिकुलर डोमेन सर्विस को आपको 2000 से भी कम दाम में देंगे, बट रिलायबिलिटी पे एक इशू आता है, इसको आपको ध्यान रखना है. अभी इतना सबको क्लियर है? अगर जस्ट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट टाइप डबल सी इन द कमेंट सेक्शन. अगर यहां तक सबको क्लियर है, जस्ट टाइप डबल टी इन द कमेंट सेक्शन. डबल सी, सी फॉर कैट. डबल सी. Face, it is clear to you, sir? Suraj ji, yes. Yes, okay. Now, okay. Okay. Now, one important aspect I want to cover. Whenever you are purchasing one hosting plan, what people do, if you're making few more website, let's suppose your one website is not enough for your business, then I would say that I would recommend go for the shared hosting. Means you can manage multiple websites. Let's suppose we have another plan of premium web domain service, in which you can link 100 websites. Storage is also there, lot for bandwidth also there. So make sure if you want to make website, if you want to make a few more websites, let's suppose more than 3 websites, in that case I will recommend if you go for premium web hosting plan, and it works well, and it is not too much costlier. But if you are managing 3 websites, definitely it will help. Secondly, make sure the monthly visit is 25,000 visitor per month. Once it's crossed more than 25,000 marks, it will show error. Sometimes देख होता है क्या कि big billion sales पे कई बार हमारी number of viewers ज्यादा हो जाते हैं वेबसाइट पे. When number of viewers is more than the expected, the minimum visit amount, definitely the website will crash. So make sure viewer are, I would say it is very, I would say it is large, means initially it is very good. Okay. Later you can increase the plan also according to the visits on your website. So in this plan, you are getting free emails. Make sure the free email, I am talking about business email. Let's suppose, how many of you know about the business email? Just type double B in the comment section. आप सबसे अनुरोध है business email के बारे में जिनको पता है, just type double B in the comment section. नहीं पता, just type no in the comment section. Okay. Whenever you're purchasing, yes, whenever you're purchasing the domain name, let's suppose मैंने एक domain name लिया satyaveersingh.com. But if मेरे end से एक email जा रहा है info@satyaveersingh.com, it helps in my branding also. So whenever you are purchasing your domain, and if you're doing email marketing or you are doing some types of corporate service, if you're selling anything, make sure with the domain name purchase the professional email also, so that if you connect with some people @your website, it makes a lot of sense, and it helps in the branding and it helps in the positioning also. So in the online world, your online reputation is, I would say, it is very much important. Why? Because जो दिखता है वो बिकता है. Make sure having good online presence is most important with brand name. So if you have professional business email, definitely it will help to win the trust of the particular client, and also it will help you to position as a brand. Okay. Let's suppose आपके पास एक मेल आया. Let's suppose you got one mail info satbirsingh.gmail.com and another mail satbirsingh.com. info@satbirsingh.com. To whom you will give importance? One with specific brand name, or one or ending with only Gmail. Okay, this expenditure is very minor, but it helps a lot. Please, Ayush, please continue. Okay, sir. Yes. So how to purchase a plan? So you have to select it according to your requirement, right?
So first is single web hosting, then other one is premium web hosting, right? So you can, if you want to create a multiple websites for your business, right? So I think you have to go with the second plan, which is of 159 rupees monthly, right? It's 159 rupees monthly when you are when you are purchasing your hosting plan for, I think, for the 4 years, right? Like when I'm just clicking or click on the add to cart button. Okay, just a second, I'm just reloading it again. Scroll it down and select the second plan, which is premium web hosting. Click on add to cart button. Yes, then you can see for 1 month it for shorter the duration, the maximum will be the cost, right? So when I purchase it from for the 1 year, you can see it will cost around 249 rupees monthly basis. Choose for 2 years. Yes, for 2 years you can see 209, right? And it's been in this plan free domain is also available, right? So the next step, you have to log in from your Google, and if you want to create account, you also can create manually. Please make sure only one domain you can get free of cost, because in this particular website you can, particular hosting can link multiple domain name, but only one domain you can get free of cost in this particular plan. Yes, so I'm just selecting for 24 months and scroll it down, and तो फ्री डोमेन भी इसमें आ गया मतलब? हाँ, exactly. एक डोमेन मिलेगा बस आपको, ओनली वन डोमेन विल गेट। कौन से इसमें 4 साल में क्या? नहीं ये 2 साल में मिल जाएगा सर। हाँ, 2 साल अगर लेते हैं तो अभी भी फ्री डोमेन मिल जाएगा। यस सर, फ्री डोमेन मिलेगा। तो मतलब ये है कि 2 साल के बाद हम जब समझो रिन्यू करने जाते हैं, उस टाइम थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा काफी। हाँ सर, बढ़ जाएगा उसमें कॉस्टिंग। तो जितना हो सके उतना लंबा लेना बेटर है इन दैट सेंस, करेक्ट? जितना एक्चुअली डिपेंड करता है, बहुत लोग वेबसाइट बनाते ही नहीं सर। हाँ, वो तो 1 साल तक मेंटेन, तो आई वुड रिकमेंड आप इनिशियली 2 साल तक चलिए, देन इफ यू कंटिन्यू देन यू कैन कंटिन्यू लेटर। श्योर। Yes. So you can see, scroll it down, you can see payment method is there, credit card, UPI, Paytm, right? So I'm just searching for the domain, for the free domain. Okay, it shows domain name free. I think its user interface is completely changed now. Have a coupon code, if you have a coupon code, you can... आपकी स्क्रीन फ्रीज होगी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही दोस्त। ओके, अभी स्क्रीन अवेलेबल है सर, अभी विजिबल है? आप दोबारा शेयर करो। अच्छा, एक मैं दोबारा से कर लेता हूँ। यस, अभी विजिबल है सर? हाँ, विजिबल है। ओके, yes, so I'm just selecting 24 month plans, plan for the 2 years. Then log in through your Google account. Yes. Domain name is free. Premium web hosting 24-month plan. It will cost you around 10,776. And SSL certificate activation is also free of cost in this plan. Then discount 53%. Then you have to pay only this amount, 5,919. Okay, so and if you have the credit card, you can choose your monthly, I would say, EMI option also. I think so that will also available. Yes. So Satya sir, I'm just searching for a domain search is I think its user interface is changed.
like if you want to like add a free domain in this plan. So I think the option is not available there. Just a second. Add to cart, 24 months, and okay. So I think after the payment, like you have the option of like how to add your free domain there, right? So you can select like according to your requirement, you can select for the 24 months and 12 months and 1 month, right? Then simply you have to pay the amount, like this amount 5919 amount. You also can like pay with a credit card, UPI, Paytm, right? So you can try like this exercise from your end, right? So I'm not going to purchase the like domain. I'm going to explain you like after the purchasing like how to get your like how to log in into your hosting account, right? So and one thing like one important thing is also like if you want to like if you have purchased your domain and hosting from the same company, right? Like you can see I'm selecting the this 24 months of the plan. In this plan you like domain and hosting is like available, like domain is free with the hosting. So you did not need to connect your like name servers, right? If you want to purchase your domain and hosting from the same company, so you did not need to connect your name servers, it automatically get connected, right? On the other hand, like I'm just showing you how to connect manually, right? So let's suppose like if you have a domain from the GoDaddy account. Yes, you can see. आयुष पहले बताना नेम सर्वर क्या होता है? What is name server? Yeah, sir. Name server is basically like it redirect your domain registrar to the IP address of your web server, right? Like if you want to connect your domain and your hosting, then make sure you have a name servers, right? And name servers always like web hosting gives you always name servers, right? So with the help of a name server, your domain and hosting get connected. Only then you can do a next exercise like installing a WordPress, right, sir? Is it clear? So basically, Ayush ji, आप बोल रहे हैं, in case we are selecting the domain from a different host and yes, the hosting plan from a different website, then we need a name server. Yeah, exactly, sir. Exactly. Then you have like you need a name server. Like if I purchase a domain from my GoDaddy account and I purchase hosting from the hostinger. So then only you have to manually like search your name servers from the hosting account and like how to like connect your name server. I'm just showing showing you the procedure. You're showing that now. Okay. Yeah. Yes. So like it's already login, so you have to make an account on your GoDaddy and the process will be the same, like how to book your domain from here, right? So I'm just searching the same domain, yoga tutor, and click on enter. Okay, so you can see .com is not available and .in is available. So process will be the same, like you have to click on the add to cart button. And for the 2 years, it will cost you, I think, 748. And if I'm selecting it from for 1 year, yes, so you can see 499, right? Then click on the continue shopping and continue to cart, right? So start your website for free, and you can see like create an email address that matches your domain, right? So you did not need to like select your professional email from this account, right? You have to click on the no thanks button over there because your hosting plan gives you a free email, right? So you did not need to connect. You have to deselect this option, right? Then continue to cart.
Yes. Okay. So you can see 748 is your total amount to be paid. Yeah, 1 year. Now it will reduce the price. Yes, 499. Then the process will be the same. Ready to pay. Then you have to select from the, like, if you want to pay through your like credit card, debit card, and UPI, right? So these all options are available over there, right? After the purchasing, after purchasing of your domain, then go back to your GoDaddy account. Then you can see your profile name is visible there. You can see it's a Satyavir, Satya sir ka account hai yahan pe. Then click on this, and you can see under account, you can see my products, right? My product means like if we purchase a hosting, and if we purchase a domain, like multiple domains in my GoDaddy account, then it will show you all your products over there. So click on my products, right? Yes. So you can see in this account, you can see domain is there. Like first domain is shikhamargdarshan.com. Second one is gayatridentalclinic.in, and third is shikshamargdarshan.com, right? So if you want to connect this domain, right, like this one, shikshamargdarshan.com, so you just have to click on this three dots option. You have to click on this. Then you can see edit setting and manage DNS. Manage DNS means manage domain name servers, right? So we are searching for this option. So click on this manage DNS button. Yes, right. So you can see when you click on this manage DNS button, then scroll it down and search for a name server, right? You can see name servers is available there. Okay. Protected registration, protecting your domain, but there's one last step. Hello, Ayush. जी सर बताइए. Actually could not understand what is the difference between domain name and the name server. Okay, sir, domain name is basically your website name, like address of your website, right? Like if you have a home, and it is located on a particular address, right? So this will be your domain, right? And Right. yeah, so name server is basically if you want to connect, like if you want to redirect your domain into your web hosting, right? Like sir, yeah. So for connecting your domain with the web hosting, so that is name server, right? With the help of a only name server is required to connect your domain with the hosting plan, right? Okay. Without connecting the name server, your website is not working. Your domain is on a one hand, and your web hosting is separately, right? So make sure. Okay. Yeah. So if you want to make a website, so the main portion is connect your domain with the hosting plan. So if you want to connect your domain with the hosting, so name server is mostly required. Okay, sir. Yes. So I'm just I think the domain is expired. Then I click on this manage DNS button. Okay. Okay. It will just a second. Manage DNS. Okay, I'm just showing in my another account. I think the domain is expired in this account, so there is no option available to edit your name servers. Okay, just a second. Yes, right. I'm just showing you it again.
So after logged in into your GoDaddy account, if you want to if you purchase your domain from a different company, so please make sure you have to log in first into your in your domains account. Then you can see two domains is there, like one is anishblogs.in, then other one is ayushbagel.com, right? So you have to click on these three dots, and you can see multiple option is there, like edit settings, manage DNS, setup email, create a website, connect to an existing site, right? So you just have to click on the manage DNS setting, like manage DNS button, right? So you can see records is blank, name servers, right? So like this is the like mostly important part for the website building, right? So you have to click on this button, change. So when I click on change, yeah, okay, so you can see you like it's a like it will give you option if you want to change your name servers, right? So how to get your name servers? So I'm just going back, like if you like have a purchase your hosting from a different company, right? So you can receive a kind of a email. I'm just showing you, and Gmail. Yeah, this one. Okay, yes. So you can see this kind of a email, right? If you if you purchase your hosting plan from a different company, you you will receive this kind of a email, like account information, this one. Okay, so yes, so search for a name server in that mail, right? So first of all, I can show you, like new account information is there, your web hosting plan, your login details. Like if you want to log in into your cPanel, right? You can see control panel URL, right? So if you want to log in into your cPanel, then simply click on this link, and your username is this, and your password is this, right? So I'm just searching for a name servers, right? So you can see under name servers, server information, your server IP is this 103.129.97.141. Okay, under this option you can see name server is there, dns1.reseller name servers.in and dns2. So you have to just copy this name server, okay, copy, and go back to your GoDaddy account, and you have to just paste it here, right? Like this. आपको वहां से कॉपी करना है नेम सर्वर्स को, और आपको इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है. कॉपी एंड. एक क्वेश्चन है. यस. सपोज कि मैं परचेज करता हूँ, होस्टिंग ने परचेज किया. जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है, मैंने दूसरा वेबसाइट परचेज किया, ये होस्टिंग दूसरा डोमेन परचेज किया मैंने GoDaddy से, और फिर मैंने होस्टिंग परचेज किया अपने होस्टिंग राजा के, इसको अपग्रेड किया मैंने, ठीक है? तो जो दूसरे का जो ये है, जो उसमें जो आएगा दूसरे का, जो अभी जो आपने नेम सर्वर जो चेंज करने की बात की, तो वो मेरा कहाँ आएगा? वो होस्टिंग राजा के इसमें आएगा क्या? अभी सर मुझे ये बताइए, अभी जो आपका होस्टिंग है वो कहाँ पर है, कौन से प्लेटफॉर्म पर है, और डोमेन कौन से प्लेटफॉर्म पर है? डोमेन, दोनों डोमेन है मेरे पास, दो ये है, दो मेरे पास में है ये, क्या बोले? नहीं, डोमेन सर कौन से अकाउंट पर है? GoDaddy पर है, होस्टिंगर पर है? डोमेन जो है GoDaddy पे है, और होस्टिंग मेरे पास जो है वो होस्टिंग राजा पे. ठीक है, होस्टिंग राजा पे है. So the procedure will be the same, sir. You have to search your you have to log in first into your hosting raja hosting account. Then you have to you can आपको वहीं से सर ऑप्शन मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे आपको. मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम होस्टिंग परचेज करते हैं, जैसे मेरे पास जो दूसरा ये है, दूसरा मेरे पास जो डोमेन है, उसके लिए मुझे होस्टिंग परचेज करना है, ठीक है? तो मैं उसके लिए मैं जो परचेज करूंगा तो उसमें डोमेन नाम देना होगा ना हमको, तभी उसमें आएगा ना डोमेन नेम, तो हमको देना होगा होस्टिंग परचेज करने के लिए. नहीं, डोमेन नेम तो सर अगर आप होस्टिंग राजा से ही परचेज कर रहे हैं तो डोमेन नेम आप उस वाले डोमेन पर ही ले सकते हैं जो आपका पहले से है वहां पे. अच्छा, राइट सर. तो उसके बाद तो उसको हम नया उसमें आईडी पासवर्ड कैसे डालेंगे? जो मेरा जो दूसरा है उसमें हम कैसे उसमें डालेंगे? उसका क्या कहाँ से आएगा?
उसमें सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डोमेन को ऐड करना पड़ेगा होस्टिंग राजा के अकाउंट में, लॉगिन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद अपने डोमेन को ऐड योर वेबसाइट का ऑप्शन आएगा सर वहां पे, ठीक है। सो ऐड योर वेबसाइट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और अपना डोमेन को वहां पे डाल देंगे। डालने के बाद में आपको क्या करना है, गो बैक टू योर GoDaddy अकाउंट एंड आपको अपने होस्टिंग अकाउंट से नेम सर्वर्स को कॉपी करना है, और जो मैं प्रोसीजर अभी दिखा रहा हूँ आपको, सेम प्रोसीजर आपको करना है सर। नहीं, मैं जो GoDaddy में जाऊंगा तो मेरे हाँ। पास तो होस्टिंग राजा का तो होगा नहीं, होस्टिंग राजा का कहाँ से आएगा ये जो नेम सर्वर में जो है ना सर होस्टिंग राजा, हाँ। आप सर ये बोल रहे हैं ना कि आप होस्टिंग, आपने होस्टिंग खरीद लिया है, ठीक है, लेट्स हाँ, सपोज हाँ, आपने होस्टिंग कहीं से भी खरीद लिया, आपने होस्टिंग राजा से होस्टिंग को खरीद लिया है, राइट। ठीक है, ठीक। तो अब मुझे ये बताइए, जो आपने होस्टिंग खरीदा है वो मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए है या सिंगल हाँ, वेबसाइट के लिए? मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए। हाँ, तो फिर बिल्कुल इजी है सर। आपको क्या करना है, सिंपली आपको नेम अपनी जो डोमेन है, आपको डोमेन को ऐड करना है अपने होस्टिंग राजा के अकाउंट में, ठीक अच्छा, है। होस्टिंग और राजा के अकाउंट में मुझे ऐड करना होगा। हाँ हाँ, आपको ओके। डोमेन को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको होस्टिंग राजा के अकाउंट से नेम सर्वर्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद GoDaddy के अकाउंट में मैनेज DNS की सेटिंग में जाके, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। ओके, एक चीज मुझे और बता दीजिए, मुझे होस्टिंग राजा के साइट में कहाँ से जाके कॉपी करना होगा वो नेम सर्वर को? सर आप मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर लीजिए, कल मैं आपको AnyDesk पे बता दूंगा, ठीक है, कैसे करना है आपको। ठीक, ठीक है सर। ठीक। यस, ठीक है। सो इसके बाद आपको क्या करना है, आपने अगर डिफरेंट कंपनी से लाइक इफ यू हैव परचेज योर डोमेन फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी, यू हैव लाइक यू विल हैव रिसीव दिस काइंड ऑफ अ ईमेल, राइट। सो सर्च फॉर अ नेम सर्वर एक ऑप्शन। क्वेश्चन मेरा और था कि अगर मेरा होस्टिंग अगर मैंने परचेज किया तो जो पहले वाले के लिए परचेज किया तो दूसरे वाले के लिए भी सेम ही होगा? बिल्कुल सर, अगर मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए आपने प्लान लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डोमेन को ऐड करना है। जो आपका पहली वाली जो डोमेन आपका, जो मैंने पहले ऐड किया हुआ है उसी को मुझे जाके ऐड करना होगा उसमें? नहीं 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 सर, आपको जो डोमेन आपके पास है ना, आपको जो कनेक्ट करना है, आपको उसे ऐड करना पड़ेगा। हाँ, वही मैंने कहा ना कि जो पहले वाला जो उनका जो ये है ना, जो DNS सर्वर है, उसमें जाके मुझे ऐड करना होगा पहले वाला ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक है। सो यू हैव टू कॉपी योर नेम सर्वर्स फ्रॉम दिस मेल, राइट, एंड पेस्ट इट देयर, देन लाइक क्लिक ऑन द सेव बटन। मैं अभी आपको यहाँ से लाइक करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये डोमेन लाइव है, ठीक है। सो आपको सेव कर देना है, ठीक है। सो सेव करने के बाद में लाइक इट विल टेक मैक्सिमम 24 आवर्स और मिनिमम लाइक मे बी 30 मिनट्स और 1 आवर, राइट, टू अपडेट योर नेम सर्वर्स, राइट। सो आफ्टर लाइक ये आप जब जैसे ही आप अपडेट कर देंगे, इसे अपडेट करने के बाद में बेसिकली क्या होगा, आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल का एक लिंक मिलेगा और यहाँ पे पासवर्ड मिलेगा। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। यस, सो यू कैन सी cPanel। cPanel इज बेसिकली कंट्रोल पैनल। लाइक यहाँ से आप अपना लाइक जो भी वेब स्पेस आपने खरीदा है, आपकी होस्टिंग ने आपको दिया है, उसके हर एक फंक्शन को आप यहाँ से देख पाएंगे, राइट। सर ये cPanel कहाँ से आया अभी? हाँ, cPanel सर ऐसे आएगा, जैसे मान के चलिए अगर आपने अपना डोमेन और होस्टिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म से बाय किया है, ठीक है। सो अगर आपने डोमेन होस्टिंग अलग प्लेटफॉर्म से बाय किया है, तो आपको एक ईमेल रिसीव होगा आफ्टर परचेजिंग योर ऑर्डर, ठीक है, वो समझ राइट। गया। सो उस ऑर्डर में आपको ये सब डिटेल्स मिलेंगी सर, ये वाली लॉगिन डिटेल्स, योर cPanel का URL, सर्वर इंफॉर्मेशन, योर नेम। ओके, cPanel का URL यहाँ पे दिया है, ठीक है। या एग्जैक्टली, समझ गया, ठीक है, राइट। और अगर आप क्लिक करने से आप वहाँ पे गए थे? हाँ हाँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे ये कुछ आईडीज और कुछ पासवर्ड दिए गए हैं जी। इसे मैंने यहाँ पे डाल लिया और मैंने इसे लॉगिन कर लिया, राइट। सो लॉगिन करने के बाद में अब देखिए सर, यहाँ पे ये प्रॉपर cPanel आपका लोड हो गया यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक ईमेल, इफ यू वांट टू क्रिएट अ ईमेल, लाइक आपके पास एक फ्री ईमेल आपको मिला है, आपको क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ से भी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। फॉरवर्डिंग लगानी है तो आप फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो अभी मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इसे नीचे, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन एंड सर्च फॉर अ वर्ड। ईमेल जो है फ्री ईमेल, अभी वहाँ पे हमको चूज करना पड़ेगा ना अभी। तो cPanel अभी आपने जब नेम सर्वर से वो सेव कर लिया, उसके बाद डोमेन और होस्टिंग दोनों ज्वाइन हो गए, मतलब? हाँ एग्जैक्टली। अभी तो सर मैंने आपको उसके बाद अभी हम यूटिलिटी यूज करने के लिए cPanel में जाते हैं, या एग्जैक्टली सर। लाइक इफ यू वांट टू इंस्टॉल अ वर्डप्रेस ऑन योर डोमेन, so make sure you have to log in into your cPanel
एंड ये सी पैनल सर सभी का अलग अलग होता है, राइट? आप देख हाँ, सकते हैं यहाँ पे ये सी पैनल ऐसा दिख रहा है, बट like if you want to purchase your hosting from Hostinger, then Hostinger gives you H panel in place of a C panel, right sir? Okay. But functionality will be the same, like procedure will be the same for all the C panel. Got it. Okay, so search for a WordPress option. Yeah, you can see like second last row WordPress is there, so you have to click on this WordPress. After connecting your name server, like it will take a time around 1 hour or 2 hour maybe, then you have to log in into your cPanel, then search for a WordPress, then scroll it down and okay, just a second, I'm just creating a subdomain, right? If you want to create a subdomain, then you can learn how to create a subdomain. Search for a yes, you can see add-on domains and subdomain is there, so click on this subdomain button, then I'm just giving like A1, right? So the link will be a1.peopletrainersacademy.online. okay, so just type here, like it's a like prefix section. If you want to create a subdomain, I'm just showing you that like मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक ये है? सब डोमेन क्या होता है? सब डोमेन इज सर बेसिकली लाइक आपका जो मेन डोमेन होता है, राइट? जैसे मेन डोमेन है आपका test.com, ठीक है? सो आपको होस्टिंग में क्या मिलता है? आपको होस्टिंग में ऑप्शंस मिलते हैं, यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल सब डोमेन्स फॉर योर वेबसाइट एंड राइट। सो आपने यहाँ पे क्या किया है, एक सब डोमेन को क्रिएट कर लिया है, मैंने यहाँ पे A1 लिख दिया है और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? लाइक अब ये क्या हो जाएगा, a1.peopletrainersacademy.online, राइट? ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए दिखा रहा हूँ, लाइक हाउ टू इंस्टॉल अ वर्डप्रेस ऑन अ डोमेन, राइट? आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका तो सर मेन डोमेन ही होगा, आपने जो डोमेन बाय किया है आप उसी पे वेबसाइट बनाने वाले हैं, सो आपको ये क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? यस, सो स्क्रॉल इट डाउन एंड अभी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस वर्डप्रेस ऑप्शन, राइट? then you can see like peopletrainersacademy.online, these all over the like ये आपका सारे डोमेन्स है जिनके ऊपर वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है? ये वेबसाइट है आपकी, ये वाली वेबसाइट है आपकी, ये है आपकी, ये है, ठीक है? सो मैं यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ बटन एंड मेक श्योर यू हैव टू सेलेक्ट HTTPS, राइट? नॉट HTTP, ओनली HTTPS. Then you have to select the domain, like जहां पर आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है उस डोमेन को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? So I'm just selecting a1.peopletrainersacademy.online. Okay, so you can see your site name, you can give your site name is like yoga tutor, okay? Then you can see if you want to change your like you can see admin account option is there, and under admin account you can see admin username and admin password, okay? So you can also change it from आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है। बेसिकली ये मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज कहाँ पर होने वाला है, राइट? इनका यूज होगा आपका जब आप वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे डायरेक्टली, ठीक है? तो स्क्रॉल इट डाउन and click on this install button. Yes, so you can see congratulations, the software was installed successfully. Okay, so अभी क्या हुआ, ये जो हमने सबडोमेन बनाया था a1.peopletrainersacademy.online वो लाइव हो चुका है। आप उसे अपने एंड से भी चेक कर सकते हैं सर, आप ये डोमेन को सर्च कर लीजिए गूगल क्रोम पे, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए सर। सो ये हमने क्या किया है, आज हमने बेसिक वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। हमने सबसे पहले आपको डोमेन परचेज करना है, ठीक है? देन आपको होस्टिंग को परचेज करना है। देन अगर आपने डोमेन और होस्टिंग को सेम प्लेस से आपने खरीदा है तो आपको नेम सर्वर को कनेक्ट नहीं करना है, ओके?
आपको सिंपली होस्टिंग में लॉगिन करना है और वहां से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। बट अगर आपने डोमेन और होस्टिंग को अलग अलग जगह से खरीदा है, सो आपको ये एक्सरसाइज करना होगा। आपको बेसिकली अपना जो ईमेल मिलेगा, आपको ईमेल रिसीव होगा, वहां से आपको नेम सर्वर्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको उसे अपने GoDaddy के अकाउंट में जाके कनेक्ट कर देना है, ताकि आपका वेब होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट हो जाए और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए, राइट। उसके बाद में आपको ईमेल में आपको cPanel का लॉगिन आईडी और पासवर्ड और लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। सो आपको वहां से cPanel का जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, उसमें लॉगिन करना है, देन सिंपली आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। Now it is clear to all of you. हाँ क्लियर तो है। सिर्फ वर्डप्रेस एक्चुअली क्या है, मतलब व्हाट सॉफ्टवेयर इज इट Actually, for? Yes, yes. WordPress is a platform on which a person who do not know coding, they can make the website. Okay, it is ready-made coded platform, just like Wix. It is WordPress is a platform in which you can make your own website. But because if you want to make website, you have to learn PHP, etc. Those person who are not tech savvy, this platform provided just like drag and drop type of service. So in this on this platform, you can make your own website easily and effectively, even if you do not know any coding. Okay. That is why WordPress is like, we will use WordPress basically because we are not into technical stuff. Yes, sir. But by the WordPress mode, today is more than 75% of the website which is running on internet are on WordPress, sir. Yeah, sufficient है। मतलब अगर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है या बड़ा कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो then they may go for different things, but for Yes, our sir. kind of a business it is good enough. Yes, sir. Okay, sir. It is Okay, clear to so all of you. सबको एक समझ में आ गया? आप सबको समझ में आ गया? सभी लोगों को? मैं चाहता हूं प्लीज अनम्यूट करके बोलें आप लोग, या चैट पे लिखें प्लीज, स्पेशली टू फेरिस एंड सूरज जी। Clear. यस सर, यस सर। यस ओके। सर मुझे एक पूछना है, ये जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी फ्री और इन्फिनिटी पेड है, तो उस पे भी अपन ट्रायल बेस के लिए कुछ ले सकते हैं क्या सर्वर के लिए? समझ नहीं आया सर मुझे सवाल आपका। इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक सर्वर आता है ना, एक फ्री में भी आता है और पेड में भी आता है, तो क्या वो ट्रायल बेस पे ठीक है क्या उसको? देखिए, फॉर इफ यू गेटिंग फ्री servers, free domain and free domain and hosting, you can go for that, but do not make your entire website on this particular section. It for practice you can do, sir. हाँ यस, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या होती है समझना, फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिक्कत आ सकती है in terms of speed, in terms of I would say interface issues, server issues, etc. So I recommend, if you are making your own website, if you are run a business, purchase a decent hosting plan. No, do not go for cheaper hosting plans. अच्छा, You can purchase a domain name at a cheaper cost, but hosting plan should be good, sir. ओके। Should be, yes, sir. Yes, you can recommend, sir. Namecheap recommend, yes, sir. For cheaper plan, you can go for the cheaper hosting plan. सस्ते प्लान आप ले सकते हो, बट नॉट फॉर लॉन्ग रन, नॉट फॉर द आई वुड से फॉर heavy traffic. Let's suppose you have monthly 2000 visitors, then we will recommend you go for cheaper hosting plan. But if you are making website and if you're doing some sort of service and marketing will be involved, calling will be involved, in that case I will recommend at least you should have a decent hosting. I will not say you should go for very premium hosting plan, but at least some decent hosting, that so that you can get quality hosting service. If I can say, Namecheap is the name of a company, yeah, and they have different hostings for different plans and so on, but they're very quick loading time and not too expensive. Yeah, very good quality. Ayush, please check this particular platform, Namecheap. Okay, just a second. I put the link here. Yes, sir.
Now here you can go to, click on the hosting plan. Okay, yes. See the plans. Shared hosting. Yes. Okay, it's $1.58 monthly. So it is same just like India, sir. Okay, it is showing in terms of $1 in what in India we have 73 rupees of $1, sir. Same here, same here. It is approx same, sir. Yeah, but it's faster. They have very fast loading time and Yes, sir. Yes, sir. and good customer service. Okay, that we can recommend also. Have you used this particular platform, sir? I used it, yeah, and I bought my domains from them because Okay. normally they're cheaper for buying domains, and very good customer service. They help very quickly, immediately. Okay, sir. We can recommend that because let's suppose we have that got from home free from your side. Definitely, you will recommend, but because sometimes 2-3 times sorry, sometimes 2-3 times faster they load than okay. sites, yeah. Then we can recommend. You can try, see. Okay, definitely, sir. We will recommend at least because especially in terms of hosting experience, we already ask for feedback. Okay, for which platform you have used and how was the hosting experience. So definitely, if it is working well, definitely we will recommend. Good. I should add this particular platform also. Okay, sir. Okay. So that's all for the day. आज इतने सिखाना था. Yes, sir. Like इतना ठीक है. Hosting domain connect हो गया, WordPress install हो गया. So next class में हम करवा देंगे. Like proper theme change कैसे करना है, आपको basically demo कैसे import करना है अपनी website. Okay, next class we will let you know how we can start managing our website, how you can integrate the themes, etc. So I request all the audience at least purchase one domain and hosting so that in the next class at least you can have a very fruitful discussion and interaction. जितना आप discussion अच्छा रखेगा, at least come with domain and hosting. And if you have any issue while purchasing domain or hosting, please connect us tomorrow so that we can solve a particular problem. Satya, just one small question from Yes, me. sir. Yes, sir. अभी जैसे हम लोग अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल ऑन दी वेब डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है. सो फॉर द सेक ऑफ एंड एनीवे दिस इज मोर लाइक अ ट्यूटरिंग क्लास. So can I start with a free domain and host? Okay. Yes, and it is. To use it and is to go recommended, through all sir. our sessions for the next 1 month. It is recommended. It is recommended. And then move on. Once I'm comfortable with using these things, then I can move on to a paid service. Is that a good way? It is a good way. But if you are making one website, definitely lot of effort will be required. Make sure. For one website, effort will be required. So same effort you have to put again. That's why for basic you can make, but if you're making advanced website, then I will recommend at least purchase a hosting plan. But because to make one good website, at least it will take 2 to 3 days, sir. Understand, sir. Okay, got it. Okay. So what you can do if you're doing, if you're making a demo website, have the write-up ready, have the brochure ready, have the image ready. And you should save all the image and write-up. Let's suppose if I have all the write-up, image, content, within 2 hours, people can make the website. So that all things that you should have in your Word format or Excel format, whatever you have. हाँ वो तो हम लोग anyway बनाएंगे for practice when we are तो वो पूरा हम लोग save कर लेंगे. Then we will refine it later and then put it on the normal website. ऐसा करना. Yes, sir. Then that you can do, sir. Okay, thank you. चलिए आज की क्लास में आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद. और now still if anyone have doubt, just type, you can unmute yourself, you can ask also. आप अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं. अब या तो सबको समझ में आ गया या किसी को समझ नहीं आया, प्लीज. ठीक है, आई थिंक सबको भूख लगी है शायद. अभी रात का भी कहा, अभी डिनर कहाँ लगेगा, सजीव तो 8 बजे है. अच्छा था, इट वाज वेरी क्वाइट सिंपल वे एंड प्रैक्टिकली जब सामने दिखता है तो सीखना थोड़ा आसान हो जाता है.
आप सबसे रिक्वेस्ट है घर में प्लीज प्रैक्टिस करें, क्योंकि वेबसाइट की क्लास इट इज हाईली प्रैक्टिकल. एटलीस्ट प्रैक्टिस एंड सो दैट यू कैन डू थिंग्स लेटर इन इफेक्टिव वे. सो आज आप कीजिए, और नेक्स्ट वीक वी विल हैव a special series on online reputation and brand management. Okay, so I request all the persons, please do not skip the particular series. Okay. इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास इसका नेक्स्ट क्लास 1 डे छोड़ के होगा शायद इसका अल्टरनेटिव. बता दीजिए. ओके, थैंक यू. कौन ये दूसरा कौन सा सब्जेक्ट बोले आपने? बैंक कौन सा मैनेजमेंट? नहीं, एक्चुअली अभी नेक्स्ट जो सीरीज आ रही है वो है ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट. ओके. Next series are coming. Next series will be starting on next week for Prime members. Online brand building and reputation management. Please do not miss that wonderful series. There will be 4 webinars back to back daily without any break. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Yes, sir.